माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि हम सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ Edu101 के लेसन नंबर 25 के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट शेयर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ चलते हैं जी ऑब्जेक्टिव पार्ट की जानिब। अकॉर्डिंग टू बर्नस्टेन कोड रेफर टू अ regulatory mechanism that determine what happens where in which two aspects of education। तो ऑप्शंस हैं assessment and evaluation, pedagogy and curriculum, discipline and classroom management, textbook selection and implementation। तो ऑप्शन नंबर है जी बी, pedagogy and curriculum। नेक्स्ट MCQs है व्हाट डज curriculum डिफाइन अकॉर्डिंग टू बर्नस्टेन। तो वैलिड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, वैलिड रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज, वैलिड नॉलेज इटसेल्फ, वैलिड असेसमेंट ऑफ नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर सी है वैलिड नॉलेज इटसेल्फ। नेक्स्ट है MCQ नंबर 3, Bernstein work on pedagogic discourse is concerned with the production, distribution and reproduction of what? Official knowledge, unofficial knowledge, informal knowledge, personal knowledge। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑफिशियल नॉलेज। Next MCQ 4, according to the paragraph, how do changes in the division of labor influence the meaning system and code। तो पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ तो खैर MCQs नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से आ सकता है हाउ डू चेंजेस इन द डिवीजन ऑफ लेबर इन्फ्लुएंस द मीनिंग सिस्टम एंड कोड। तो ऑप्शन दे लीड टू कंसेंसस and equal power relations, they create conflict and unique unequal power relations, they eliminate power relation altogether, they have no impact on the meaning system and code। तो ऑप्शन नंबर बी है they create conflict and unequal power relations। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 5, व्हाट इज द consequence ऑफ labeling students and designing expectation based on diverse variables। Students perform better academically, students are provided equal opportunities, most students are put at a disadvantage। तो ऑप्शन नंबर सी है मोस्ट स्टूडेंट्स आर पुट एट अ डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द लेबलिंग थ्योरी व्हाट इन्फ्लुएंसेस द ऑप्शंस अवेलेबल टू अ स्टूडेंट विद इन अ स्कूल। तो ऑप्शन नंबर है सोशल क्लास, फिजिकल अपियरनेस, इवेल्युएशन टैग्स, इवेल्युएटिव टैग्स या फिर टीचर एक्सपेक्टेशन। तो ऑप्शन नंबर सी है इवेल्युएशन टैग्स। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 7, व्हाट डज लेबलिंग थ्योरी फोकस ऑन रिलेशन टू डाइवेंस, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइवेंट बिहेवियर, द कॉजेस ऑफ डाइवेंट बिहेवियर, द प्रोसेस ऑफ लेबलिंग डाइवेंट individuals, the eradication of deviant behavior। Option number C is the process of labeling deviant individuals। Next MCQ number 8, how does social control affect deviant behavior according to the paragraph? It eradicates a deviant behavior completely, it generates more deviant behavior, it has no impact on deviant behavior, it clarifies group boundaries। तो ऑप्शन नंबर बी है इट guarantees more deviant behavior। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 9, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ MCQs नहीं आते, लेकिन नेक्स्ट जो है लाइन इस तरीके से आ सकती है, हाउ डज लेबलिंग अफेक्ट अ पर्सनस आइडेंटिफाई।
It has no impact on person's identity. It defines a person's social status. It influences a person's behavior. It becomes a central part of person's identity. So option number D है, it becomes a central part of a person identity. Next है जी MCQs number 10. What factors play a powerful role in generating teacher expectations? Option number है जी native ability and physical appearance, race and ethnicity, test scores and school records, social class and language patterns. तो ऑप्शन नंबर बी है रेस एंड एथेंटिसिटी. तो नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 11. व्हेन डू टीचर expectations for student begin to form according to the graph? तो ऑप्शन है जी ड्यूरिंग मिडिल स्कूल, ड्यूरिंग हाई स्कूल, ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ स्कूल. तो ऑप्शन नंबर है जी सी ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ स्कूल. नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 12. व्हाट इज अ सेल्फ फुलफिलिंग prophecy? A prophecy made by oneself, a prophecy that cannot be fulfilled, a prophecy that leads to deviant behavior. Option number D है prophecy that becomes true because it is believed. तो ऑप्शन नंबर डी है a prophecy that becomes true because it is believed. नेक्स्ट है जी 13. According to the graph, who plays a role in defining what forms of conduct should be signed out for attention? तो पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर, कम्युनिटी मेंबर्स. तो ऑप्शन नंबर डी कम्युनिटी मेंबर्स. नेक्स्ट MCQ नंबर 14. 8 terms of school priorities. What should be the focus according to the paragraph? तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ जो लाइन आप काट सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ स्कूल व्हाट शुड बी द फोकस? एजुकेशन फॉर ऑल, focus on academically talented students, curriculum to challenge smart students, focus on disadvantaged students. तो ऑप्शन नंबर ए है एजुकेशन फॉर ऑल. नेक्स्ट है जी 15 MCQ इज अकॉर्डिंग टू द ग्राफ. तो ये लाइन आप काट दें. हाउ कैन स्टूडेंट्स विद dyslexia benefit from their peers? By receiving individual instruction, by being labeled as bright or slow, by being grouped with students of mixed abilities, by receiving extra time for tasks. तो ऑप्शन नंबर है सी by being grouped with students of mixed abilities. Next is 16 MCQs. Why should the aim of education change over time according to the paragraph? तो ये टाइम तक आप MCQs कर सकते हैं. To adopt the technological advancement, to maintain a paper pencil culture, to keep the world static, to align with the kingdom of God. तो ऑप्शन नंबर ए है to adopt the technological advancement. Next is 17 MCQs. What should the curriculum consider according to the graph? तो the changing world, the stability of the world, the kingdom of God, the aim of education. तो ऑप्शन नंबर ए है द चेंजिंग वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 18. अकॉर्डिंग टू ग्राफ. तो ये लाइन काट दें. व्हाट शुड नॉट बी फॉरगॉटन इन द आइडियोलॉजिकल करिकुलम? तो प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द
Kingdom of God, preparing student for the hereafter, preparing student for the paperless classroom culture, preparing students for technological advancement. तो है जी एमसीक्यू नंबर ऑप्शन है जी ए, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। नेक्स्ट है जी 19 एमसीक्यूज, व्हाट डज अ पैराग्राफ सजेस्ट अबाउट द स्टूडेंट्स रूल एंड स्कूल अचीवमेंट। तो पैराग्राफ का मतलब यह है कि जो लेसन है वो उसको मेंशन किया जाता है। तो खैर एमसीक्यूज जो है ऐसे एग्ज़ाम में नहीं आते, लेकिन उसके अलावा जो है बकिया अचीव जो इबारत है वो आ सकती है। व्हाट डज suggest about the teacher's role in student school achievement. Teacher have no impact on school achievement. Teacher are solely responsible for school achievement. School achievement depends on a child's native ability only. Teachers play a significant role in school achievement. तो ऑप्शन नंबर डी है, टीचर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्कूल अचीवमेंट। नेक्स्ट है 20, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, तो ये लाइन नहीं होगी। व्हाट इन्फ्लुएंसेस द विलिंगनेस टू diagnose behavioral traits as serious illness। तो ऑप्शन है जी सोशल स्टेटस, एकेडमिक अचीवमेंट, नेटिव एबिलिटी, टीचर एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन नंबर ए है सोशल स्टेटस। नेक्स्ट हम चलते हैं जी लेसन नंबर 25 के सब्जेक्टिव पार्ट की जानिब। अकॉर्डिंग टू बर्नस्टाइन, व्हाट डज कोड डिटरमाइन इन एजुकेशन। तो इसका सॉल्यूशन आंसर जी कोड डिटरमाइंस व्हाट हैपेंस इन करिकुलम एंड पेडागोगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोड अकॉर्डिंग टू बर्नस्टाइन। Code refer to a regulative principle underlying curriculum and pedagogy. Next है जी question number 3, how does the same textbook result in different teaching approaches? Teachers interpret and teach the curriculum differently. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज कुरिकुलम डिफाइन एंड व्हाट डज पेडागोगी डिफाइन। कुरिकुलम डिफाइन वैलिड नॉलेज while pedagogy define valid transmission of knowledge। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बर्नस्टाइन फोकस इन हिज वर्क ऑन पेडागोजिक डिस्कोर्स। Bernstein focus on the production, distribution, and reproduction of official knowledge and its relation to power relations. Next, question number 6, what does Bernstein argue about school in relation to their ideological communication commitment। तो जी स्कूल reproduce what they are ideologically committed to eradicating। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, what does the code incorporate according to Bernstein। The code incorporate a conflict model of unequal power relations। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, what is the outcome of the functioning described by Bernstein। तो आंसर है जी द फंक्शन लीड्स टू privilege and domination rather than consensus। Next 9, what are some variables attributed to the origins of social expectations in schools। Variables such as social class, physical appearance, test scores, sex, race, language patterns, and school records। Next है जी
Question number 10. How does labeling theory related to education? Labeling theory can explain social events within schools. Next है जी 11. How can teacher help students who require more time to complete tasks? Teachers should provide sufficient time for students who need it to perform tasks. Next question number है 12. What disadvantage do diverse variables and labeling put students at? They put most students at a disadvantage. Next है question number 13. What is the labeling approach interested in understanding? The labeling approach is interested in understanding why people are labeled and who does the labeling. Next 14 question है how do evaluative tags influence a student's options within a school? So over time evaluative tags affect the options available to a student within a school. Next 15. What effect can social control have according to labeling theory? So answer is social control can paradoxically guarantee more of the behavior it aims to eradicate. 16 question है जी what role does labeling play in clarifying group boundaries? Answer जी labeling event behavior helps clarify group boundaries. Next है जी 17. How does labeling affect an individual life and identity? Being labeled as different can shape a person's life and identity. So, question number 18. What factors influence teacher expectations in relation to school achievement? Race and ethnicity are powerful factors in generating teacher expectations. 19 question is when can teacher expectations be generated and how stable are they? Teacher expectations can be generated in the first few days of school and remain stable thereafter. तो ये इसका नेक्स्ट है जी लास्ट चैप्टर नंबर 26 का लास्ट क्वेश्चन 20. स्कूल should the aim of education be changeable? Why? Yes, the aim of education should be changeable to adapt to technological progress and the evolving world. तो ये इसका आंसर. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन नंबर 26 के साथ नई वीडियो में हाज़िर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. और अपने सेम टू सेम MCQs और क्वेश्चन नहीं देखने, आपने इनको क्लियर कर लेना है ताकि एग्ज़ाम में चेंज होने के बाद भी आप उनका आंसर दे सकें. तो मोस्टली जो टॉपिक हैं वो क्लियर किए गए हैं. तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है. तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में.